इंडिया डेली लाइफ की टीम इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। हम चश्मदीदों से आपको लगातार मुखातिब करवा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो हमास की तरफ से हमला इजराइल की तरफ से बोला गया, उस दौरान यहाँ पर स्थिति क्या थी। और हम अब पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ हमला हमास की तरफ से समुद्र के रास्ते बोला गया था। मेरे ठीक पीछे आपको एक समंदर नज़र आ रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर जो हमास के आतंकी हैं वो समुद्र के रास्ते से घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान आईडीएफ के जवानों ने उन्हें पीछे खदेड़ दिया। जब ये पूरी घटना यहाँ पर हो रही थी तब यहाँ पर एक लेडी जो थी वो मौजूद थी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरान उन्होंने क्या कुछ देखा और अब इस जंग को लेकर एक आम इजराइल की महिला क्या सोचती है। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? My name is Doris. Doris. Ma'am, on the day of Shabbat last week, when the attacks happened, where were you? And when you got to know that Hamas is trying to enter the Israel territory so close from this side, what was your instant reaction? We were terrified and we went to the shelter here nearby and waited. And then the bombs came, the missiles. It was very frightening, very, very. It's you can't describe the fear of a person that knows that you are attacked by so many bad people. And since then, we are here in the shelter for 9 days already. We sleep here. We don't go back to our boat, and that's it. Ma'am, since we are also now, it has been 5 days that we are in Israel, and we get terrified when we hear that alarm, Yes. that attack alarm, The and we have to hide to the nearby place or the safe house. On an average in a day, how many times do you hear that sound in these areas? Until the day before yesterday, we had at least 10 or 15 times a day running to the shelter for these sirens. The sirens is more terrifying than the bomb sometimes, you know? Yes. देखिए, इनका कहना है कि जो अलार्म है वो एक दिन में तकरीबन 15 से 20 बार बजता है और तब इन्हें जो पास का सेफ हाउस है वहाँ पर भागकर अपनी जान बचानी पड़ती है। मैम, द वे हमास हैज़ टारगेटेड दिस टाइम द common civilians of Israel, and you must have heard about that music festival where the childrens and the youth were murdered like anything. How do you see all of this, and what do you say about the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? Is he strong enough to fight Hamas? Because last night we saw there were number of people on the streets of Tel Aviv protesting against him. I'm not a politician, and I don't know exactly how to answer that. But I think that the man who is responsible for what happened 9 days ago in that Saturday is the prime minister or the heads of the army. Where were they? So you see, it's a failure of the government and the intelligence. Yes. Otherwise, how can you explain the 2,000 terrorists enter Israel without nobody knows? There were signs before that something is going on. There were signs. We know it. There were Since signs. you were living here, so you are telling me that there were signs. ये हमें बता रही हैं कि हमले से 1-2 दिन पहले ही यहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ होने लग गई थी, जिससे इनको भी आशंका हो रही थी कि कुछ जो है वो बुरा होने वाला है। Yes, 2 weeks ago, there every day hundreds of Hamasniks were on the fences. Okay. So we knew that something is going on. Why we let them to be on the fence? Yes. इनकी नाराज़गी है इजराइल की सरकार और यहाँ की डिफेंस को संभालने वाले उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कि आखिर जब ये देख रहे थे कि हमले से 2-3 दिन पहले जो तमाम गाज़ा से सटे हमास के आतंकी हैं वो इजराइल के जब बेहद करीब पहुँच रहे थे, उस दौरान क्यों नहीं इजराइल की सरकार ने उन्हें पीछे ढकेला और ये नौबत ही क्यों आई कि इतना बड़ा हमला इजराइल पर हुआ। मैम, वी वेंट टू द सिटी ऑफ एस्कलोन, ज़रोत एंड एवरीथिंग। द होल टाउन इज़ डेजर्टेड. वी डिडंट फाइंड अ सिंगल पीपल ऑन द स्ट्रीट. Likewise, we are seeing, I guess this place used to be a tourist place and people used to come at a lot number of times. A lot of times. But
And now what we are seeing is a deserted south in Israel. Yes, because people are afraid. They all are in their houses. We're afraid. Most of I the mean- people, since we are in Tel Aviv, we return back to Tel Aviv at night. We see that there are a number of refugees in Tel Aviv. There are not refugees, they're migrants, those who have to leave their places. Yes, there is a lot in Tel Aviv. We know. So what I don't. What is the question? Question is that what has motivated you to be here in these tough times and situations, ma'am? This is where I live. You also had an I option. live here. I have options, but I rather stay here. Yeah. I rather stay Did here. the Israeli Defense Force or the police came to you and Yes. tell yes, you that yes. this place is not safe? No, they didn't say that it's not safe. No, it's safe. Of course, it's safe. Look, at the border, it's dangerous, but we are not at the border. We are about 10 kilometers from Gaza Strip. So it's okay, but this is it. We are used to wars. It's not the first time. Every 2 years there is some fight with Hamas, but this time we will finish them. That's it. Thank you so much, ma'am, You're for your welcome. time, and we wish you a very safe stay here at this place. Thank you, and give my regards to all India people. We love Indian people. तो देखिए किस तरीके से भारत को लेकर यहाँ इज़राइल के आम लोग क्या सोचते हैं, ये भी आखिरी में मैम ने हमें बताया। और ये दीवानगी जो है वो भारत के लिए आम इज़राइल नागरिकों की इसी हद तक है। हम लगातार जब बॉर्डर के इलाके पर भी पहुंच रहे हैं तो सभी जो है वो जैसे ही ये सुनते हैं कि हम भारतीय हैं, बेहद ही एक प्रसन्न चित्त मुद्रा के साथ वो हमारा स्वागत करते हैं। लेकिन इन सब के बीच स्थिति जो है वो लगातार बॉर्डर के इन तमाम इलाकों में गंभीर बनी हुई है और अब इंतज़ार इस बात का है, इज़राइल के आम लोग ये चाह रहे हैं कि इस बार हमास को सिरे से ख़त्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट देवम सिंह के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए मरीना बीच अश्कलौन से।